the second episode of Innovators se Baat, where we bring to you innovative and successful stories of startups incubated at IIT Kanpur. In this series, we have today with us Lenek Technologies, a startup working in health tech. हेल्थ टेक की जब बात होती है तो वो कहीं ना कहीं बेसिक्स नीड्स में आता है, जहाँ पे हम फूड को रखते हैं, कपड़े को रखते हैं और फिर हेल्थ को रखते हैं. एक ऐसा डोमेन, एक ऐसा सेक्टर जो सालों से बहुत नेगलेक्टेड रहा भारत में. तभी हमारे पास ऐसे न्यूज़ आते हैं कि ऑक्सीजन ख़त्म होने से 70 बच्चों की लाइफ चली गई, या डीप ट्राइबल एरिया में सही टाइम पर किसी को मेडिकल एक्सेस ना होने के कारण लोग ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं. और इसी डोमेन में कुछ ग्रुप ऑफ IITians जिन्होंने सोचा कि हम मुख्य धारा से हटकर कुछ नया करेंगे, और आज मेरे साथ लेनेक टेक्नोलॉजी के रूप में बैठे हुए हैं. वेलकम टू द शो चिराग. थैंक यू. आपके छोटे से इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करूँ कि आप लोग क्या बना रहे हो और क्या एक्साइट किया आप लोगों को ये स्टार्टअप स्टार्ट करने की इस चीज़. Yeah, so we started this journey in 2021. Initially, we were working from Pune. We were ideating on some things. We wanted to do some startup in medical sector only, because it was the period when second wave of COVID was at its peak. So there was a huge catastrophe everywhere. So we realized that there is a very big gap in terms of good engineering products when it comes to Indian medtech sector. Most of them are imported. So that's when we started, and medical imaging is one of the most challenging, you can say, and most widely used diagnostic modality. So we started in that thing, and we wanted to make products. We wanted to take healthcare to each and everyone in our country, whether he resides in a urban city or a tribal area or a rural area, anywhere. So that's how it started, and right now we are a team of around 14 to 15 people, and we are working from IIT Kanpur itself. We are incubated at SIIC, and next year we are planning to launch our first product that is going to be a portable X-ray imaging system. Okay, so having said that, you are a team of 7 IITians. Why did you chose an uncertain field of entrepreneurship rather than going for large packages जो IIT से निकलते हैं? So I think when you start preparing for IITs and when you get into that thing, you from starting only things would be uncertain. Even getting into IIT is not something that is validated, or you can say that I will get into IIT. Even at the last day of the exam, no one can say I would get through or I would get dropped. So that thing was always there. We all of us in our company, we like to take risk. We are very ambitious. We like to do a lot of big things, and job per se was not kind of our objective to get into a IIT. We didn't get into a IIT for jobs. We were really passionate about engineering. We wanted to do something for this society, for this country. That's why we shifted this thing. We shifted to startup, entrepreneurship, all of this thing. We were doing some jobs. Some of us were doing jobs back then, but we left it because that was not something that is going to change the course of our country. That is just things that a consumer needs, or those things are being produced for multinational companies or for foreign markets. So that's why we shifted to this. This is 180 degree opposite to most of the IITians जो पढ़ते हैं यहाँ पे and foreign में जाके नाशा और बड़े organization के लिए काम करते हैं. Nothing wrong in that, but you guys are doing something which is helping the grassroots. So कहीं ना कहीं जब medical field की जब बात होती है, अगर एकदम ही नीचे से स्टार्ट करें तो जब एक बच्चा स्ट्रीम चूज़ कर रहा होता है तो वहाँ पे उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं. आप तो आप इंजीनियरिंग में सेलेक्ट करें या आप मेडिकल साइड में जाएं. तो आप और पीछे 70 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखें, medical persons are not very known of the technical side or technical component. Same goes with the engineers. We are clueless about medical information. So कैसे आप देखते हैं healthcare ecosystem in India? What engineering plays role in that? Healthcare, a major part of healthcare is medical devices and technologies, which is used to diagnose, treat or care for people. So unfortunately till now in India there is no very optimum synergy between healthcare and engineering fields, and a lot of people in engineering don't know about medical stuff. A lot of people in medical segment don't know about technology and how engineering products work, and
achieving that synergy is going to take healthcare to the next level. That is the only key. So if you see in foreign countries, for healthcare institutions like big hospitals and big chains, they work with in tandem with medical device development companies like GE, Philips, these kind of companies. So that's how they have grown since a long time. Now, I think if we want to take India to the next level in the healthcare segment, the engineers have to come forward. The medical community has to come forward. They need to shake hands and start a synergic relationship so that it can be taken to the next level. Also, medical problems are unique everywhere. So the composition, the environment, everything is different in different countries. So if we are just reliant on importing products and using those in our healthcare ecosystem, that cannot give you the maximum optimum results. ऑब्वियसली मतलब जो पैरामीटर्स जो डिवाइस बहुत सक्सेसफुल है ठंडी जगहों पे यूके यूएस में वो शायद यहाँ पे ना हो. और मैं इसी बात पे आ रहा था कि 76% ऑफ आवर मेडिकल डिवाइसेस आर स्टिल बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. दैट एड्स टू अ चार्ज. इफ आई हैव टू स्टार्ट अ स्मॉल लैबोरेटरी ऑफ माय ओन तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस लगेंगे. स्टिल इंडिया इज़ वेरी known for its low cost medicines and people from outside foreigners are importing it. But जहाँ पे हम डिवाइस की बात आती है, जहाँ पे मेजर अगर ऑपरेशंस की हम बात करें उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि डिवाइसेस इन्वॉल्व, थिंग्स इन्वॉल्व इन इट ऑल आर इम्पोर्टेड. सो कहीं ना कहीं आप एक स्टार्टअप एक अपना एक प्रोडक्ट ऐसा लेकर आ रहे हो जहाँ जो इंडिजिनियसली बिल्ड होगा और उसकी क्या स्पेसिफिकेशन, उसकी क्या खासियत होगी, अगर आप उसके बारे में बताएं. Okay, so initially when we started, our focus was majorly on point of care healthcare. So basically we wanted to take healthcare solutions, majorly diagnostic solutions, to the last mile, or you can say through the doorstep of the patient. So initially we started with developing an ultrasound system, ultrasound technology, imaging technology, and that is again one of the most sophisticated technology when it comes to medical imaging, especially its hardware. So that project went on for some time. Then we got incubated at SISC, IIT Kanpur, and there was a call for making a portable X-ray imaging system because there is a huge burden of tuberculosis in India right now, and our government is trying to eradicate it by 2025. So we needed a X-ray imaging system that can be taken to the last mile, to the doorstep of the patients, that can be used to screen population in rural areas. So that's when we took this project and started working on it in collaboration with ICMR. And there were some professors involved as well. The Professor AB was PI. He is the PI of this project. Amitabh Bandyopadhyay sir. Professor Parthasarthi Sen Sharma from Electronics Department is also involved. He is guiding us. Professor Aditya Kelkar and Professor Ram Kumar from MedTech are also involved. So we worked for a year on this project, and now we have this device. So this is a portable version of X-ray imaging system that you must have seen in the medical settings. So it is a big system. There is very big cables that is taking high voltage from here and there. So that system cannot be taken, to rural settings or to places where the road connectivity is not good. और even electricity का connection नहीं है. Electricity connection नहीं है, maintenance का issue है. It is a big bulky system, तो maintenance और repair का भी बहुत issue आता है. So that's where this machine comes in. Now this portable system is for screening purposes, initial screening purposes. So it is not for final diagnostics because diagnostic is a complex thing. It contains a lot of different parameters, the symptoms, the image, then other tests, blood test and all of that. So if we can image a lot of population using this, then you can basically take out or sample out the population that is going to be abnormal or that is showing some kind of abnormality. Okay. So that's the whole concept of taking things to point of care. We don't want to treat or diagnose the patient there. We want to figure out if there is some abnormality or not. If there is some problem, there is some issue in the body, then the patient can go to higher facilities or institutions. This will reduce the burden of healthcare institutions as well, fixed institutions like hospital. So right now there is a huge crowd in hospitals. You must have seen long lines, people waiting in the queues, and there is a lot of confusion in the air as well because so many patients, so less healthcare workers. So this concept can take some
burden out of those institutions, and can, you know, patients also can have diagnosis or screening at comfort of their homes. So right. ऑब्वियसली मतलब एक सिचुएशन जब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि बहुत बार हमें डॉक्टर्स के द्वारा हमें कह दिया जाता है कि आप ये टेस्ट करा लीजिए और लाइक touch wood 75% of the time there is nothing in that test, so that cost of that test is high, and lab जहाँ पे already बहुत sophisticated test चल रहे हैं, critical test चल रहे हैं, वहाँ पे एक मेरा भी जा रहा है और जिसमें कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा, तो अगर एक मतलब शायद ये चीप भी पड़ेगा और बहुत क्विकली भी स्क्रीन करके आप मुझे बता दोगे कि भाई आपको टेस्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. Definitely. So right now, if you, let's say you have some chest pain, you go to a doctor, he sees you, he checks you up, and he will tell you कि आप जाइए एक्सरे करवाइए. Then you go to some X-ray radiology lab, you get it done. उसके बाद आप एक्सरे आते हैं और दिखाते हैं डॉक्टर को, फिर डॉक्टर बताता है कि हाँ ठीक है जो भी है. बट इसके साथ क्या हो सकता है, लेट्स से द फर्स्ट डॉक्टर, द जनरल फिजिशियन और whoever you goes to first, वहाँ पे जाके मे बी ही हैज़ दिस मशीन. अब वहाँ पे जाइए, वहाँ पे वो इनिशियल एक टेस्ट कर सकता है कि एक्सरे में कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, सो दैट ही कैन ऑटोमेटिकली गिव यू फर्दर स्टेप्स, टेल यू कि आगे क्या करना है या नहीं करना है, जो भी है. सो देयर इज़ ए कंप्लीट लूप, और उसमें अभी काफ़ी चीज़ें सेव कर सकते हैं इफ़ वी आर यूजिंग पोर्टेबल सिस्टम्स जो कहीं भी रखे जा सकते हैं. तो मेरा अगला सवाल भी इसी सिलसिले में था कि एक स्टार्टअप जो कि हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहा है, उसके लिए सर्वाइव करना बहुत, मतलब हर एक ही प्री सीड स्टार्टअप, अर्ली स्टेज स्टार्टअप को सर्वाइव करना और चांसेस दैट इट विल बी कन्वर्टेड टू अ बिग थिंग इज़ वेरी लेस. और आपके प्रोटोटाइप में ही काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स लग जाते हैं क्योंकि आप बहुत इंट्रिकेट डिज़ाइंस में कर रहे हो, आपके चीज़ें काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है. तो हाउ डिड दिस ICMR थिंग हेल्प यू फर्स्ट थिंग, एंड हाउ डिड इट अराइव टू यू, और क्या चैलेंजेस एज अ अर्ली स्टेज स्टार्टअप आपने फेस किया, आपका वो एक्सपीरियंस? So it was defined that we are going into the healthcare segment. We started working in that. After doing some work after some time, we got introduced to a lot of people through SIC. Then there was this call from ICMR that they need a product for TB, and we were the, I think, only ones here who were working on medical imaging technologies or working on hardware, AI and software, all of that thing. So that's why it came to us. We got a meeting with ICMR. We discussed with them. So they found our team promising, and we found the project promising, so we got some funds as well for the prototype development or the complete product development for this thing. And that's how this project started, and now we are almost finished with the product development. We are going for commercialization now. So that's the next step. क्या प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं इस पूरे प्रोसेस में? कितने वो दिन, वो एंजाइटी वाली चीज़ें मेरे को जानने में ज़्यादा वो है कि कौन से वो दिन थे जब लग रहा था यार होगा कि नहीं होगा, एंड गवर्नमेंट इज ट्रस्टिंग यू एंड दे हैव ट्रस्टेड यू विद दिस बिग प्रोजेक्ट. Medical industry is one of the toughest industries. What I feel is that it is one of the toughest industries to set foot in for a new company. क्योंकि there are very large players, big players who are going to come to you कि आप हम अपना प्रोडक्ट दे दीजिए, टेक्नोलॉजी दे दीजिए, या फिर आप हमारे साथ काम कर लीजिए, lot of things. तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इट वॉज पर्टिकुलरली डिफ़िकल्ट क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी नहीं था कुछ हेल्थ केयर से. वी ऑल केम फ्रॉम इधर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़. सो हेल्थ केयर में कोई ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं था. ICMR की हेल्प से काफ़ी चीज़ें समझ में आई. वी वर वेरी एग्रेसिव इनिशियली इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री. तो हम लोग काफ़ी हॉस्पिटल्स विजिट करते थे, शुरू में लोगों से बात करते थे कि कैसा होता है, डॉक्टर से बात करते थे. वी हैव टॉक टू अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स. तो वहाँ से कुछ चीज़ें समझ में आई. एज इन चैलेंजेस, देयर आर ए लॉट ऑफ चैलेंजेस. लाइक आई थिंक एवरी स्टार्टअप फेस दोज चैलेंजेस. टीम बिल्डिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज आई थिंक, क्योंकि अच्छी टीम बनाना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग. एंड उसके बाद एक अच्छी टीम को मैनेज करना, दैट इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट, क्योंकि यू कैन मैनेज अ टीम वेयर नॉट, let's say there is a team, वहाँ पे there is a hierarchy. There are some people who are not academically strong, there are some people who are not managerially strong, but हमारी टीम में it's kind of सब same level पे, including us. जब टेक्नोलॉजी की बात होती है तो there is
always the same level. Is it because सारे मतलब सारे एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, आईआईटी से आ रहे हैं, आपके मोस्ट ऑफ देम आर देयर योर जूनियर, तो ऐसा एक इकोसिस्टम है वहाँ पे? आई थिंक नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ IIT, बट जितने भी लोग अभी वहाँ पे काम कर रहे हैं हमारे साथ, दोज पीपल आर वेरी एम्बिशियस अगेन लाइक अस, और उनको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में बहुत इंटरेस्ट है. So when we are doing these things, we are doing it with a lot of interest and a lot of enthusiasm. It's not like just कि project आया और हम कर रहे हैं, we will make some money or lot of those things. So the enthusiasm is great, but at the same time this thing is hard. It is tough. It is not very easy to develop, and it is a drawback of being from IIT, because when you graduate from IIT you have a bit of arrogance in you. You have a bit of ईगो एंड एरोगेंस की हम लोग IIT से हैं और हम लोग बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी जानते हैं, वो सब चीज़ें. बट व्हेन यू स्टार्ट डेवलपिंग ए रियल प्रोजेक्ट और रियल प्रोडक्ट, यू स्टार्ट फीलिंग लाइक कि वी आर नॉट दैट केपेबल, हम में भी कुछ खामियां हैं, कुछ नहीं, बहुत सारी खामियां हैं. सो दैट्स हाउ दैट एरोगेंस वैनिशेज ओवर टाइम, और आई थिंक उसके बाद चीज़ें ज़्यादा ईजी हो जाती है. सो वो एक जर्नी रहा है, बहुत मुश्किल रहा है. शुरू में हम लोगों को मार्केटिंग का कुछ आइडिया नहीं था, हमें फाइनेंस कैसे मैनेज करना है कुछ आइडिया नहीं था. इनिशियली जब स्टार्टअप शुरू करते हैं, दे गेट अ फंड ऑफ 10 lakhs 15 lakhs, वी वर मैनेजिंग करोर्स एट द इनिशियल स्टेज ओनली. पहले इतना ज़्यादा विश्वास आप पे कर लिया गया. सो दैट वाज इट्स बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि इनको बहुत पैसा मिल रहा है या इनको बहुत इन पे कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट रखा जा रहा है, पर इट वाज अ बर्डन इन इटसेल्फ एज वेल. क्योंकि अगर आप धीरे धीरे शुरू करते हैं तो इट्स ए काइंड ऑफ easier or smooth, you can say smoother than when everything comes at once. So that was the difficult part, and also dealing with a government organization. We were all engineers, young engineers. हम लोग जब कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे, इतनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डील करना, it was not that easy. But I think we got our footing with time. अब जाके we feel a bit comfortable about this space, but there are a lot of challenges that remain. So let's see how it rolls. तो अगला सवाल भी इसी पे कि आपने गवर्नमेंट से डील करने का बताया. बहुत सारे ऐसे एम्बिशियस लोग हैं जो अभी भी किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं स्टार्टअप स्टार्ट करना. यू ऑलरेडी मेंशन दैट बीइंग एन IIT पर्सन इज जस्ट एरोगेंस, वो मैनेज करना है फिर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पर्क्स भी मिलते हैं. तो बीइंग इनटू SIC, हाउ हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस? और 4 साल आपने IIT रुड़की में काटा, तीसरा साल IIT कानपुर का है, 1 साल बाद आप यहाँ से भी ग्रेजुएट होंगे, तो यहाँ का वो एक्सपीरियंस कैसा था हर चीज़? Yeah, so I came to IIT initially for a RAship, research assistantship. I was working with Professor Mangal Kothari in aerospace department. We were working on a defense related project. So वो COVID वाला period था, not many people were here. So honestly, when I left IIT Kanpur, I decided I will never come to Kanpur again. But when we started, we wanted some incubation, some support, because we didn't have anything. We didn't have a lot of savings. We didn't have a lot of financial backing. Our families are from middle class background only. So we needed some incubation. We wanted some help. And IIT Kanpur SIC is, I think, one of the best incubators right now in medical technologies, and who is working in healthcare. And it has a combination, or you can say flavor of engineering as well. So that's why we came to IIT Kanpur. We got incubated here, and I think that helped us a lot. We got connected with ICMR through IIT Kanpur SIC. We got a lot of consultations from SIC, and we got a lot of people like you who helps us in a lot of different aspects. So it has been a very important step when we came to IIT Kanpur, and I think this collaboration has been really great. सो हाँ, मेरे को आपने जैसे पहले ही बताया कि आप पहले थे IIT कानपुर में, तो शायद आपको एक एज मिल गया कि आपको पता चला है SIC के बारे में, IIT कानपुर के बारे में. आई डोंट थिंक कि आपके रेस्ट ऑफ दी 6 मेंबर्स को शायद इंक्यूबेशन का भी शायद वो पता हो, या क्योंकि बहुत नीश है अभी, और बहुत कम अवेयरनेस है अभी भी लोगों को कि यार स्टार्टअप अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे को सच में कुछ फंड मिल सकता है. इफ आई एम डूइंग समथिंग नोवेल, आई कैन गेट सपोर्ट फ्रॉम SIC IIT कानपुर. सो व्हाट इज़ दैट थिंग कि आपने कैसे कन्विंस किया? सबसे पहले तो पेरेंट्स को करना पड़ा होगा कि नहीं भाई रियल, और फिर बाकी दोस्तों को जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एंगेज थे. So I think my parents have always struggled with me in terms of कि I do a lot of things which are not conventional. So initially when I got admitted in IIT, I didn't even know, for the IIT coaching in 11th class, I didn't even know what a IIT is. It was like a simple question was asked कि there are 2 courses, one was for JEE Mains and one was for advanced.
So they told me there are 2 courses, which one do you want to enroll in? So I asked them कि दोनों में डिफरेंस क्या है. उन्होंने बोला कि एक मुश्किल है, एक आसान वाला है. तो मैंने कहा मुश्किल वाले ही कर लो, पैसे दे रहे हैं तो मुश्किल वाले ही पढ़ेंगे. तो इट हैज़ बीन द सेम. कॉलेज के बाद भी जॉब नहीं लेनी है, कुछ करना है, फिर सीनियर्स ने बोला तो जॉब ले लिया. लेकिन फिर उसके बाद आगे करना है. रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट था मुझे. सो रिसर्च में फिर काम करने के बाद समझ में आया इंडिया रिसर्च करके बाहर जाने से अच्छा है कि इंडिया में देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर वेटिंग टू बी सॉल्व्ड. और इट इज़ आई थिंक इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अस एज इंजीनियर्स टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. उसके बाद आई मेट सत्येंद्र एंड सत्येंद्र वॉज वर्किंग विथ मी इन बजाज ऑटो दैट टाइम before RA. So I contacted him. He was also that guy कि he wanted to do something else. He wanted to build products. He was he did a lot of work in robotics at his household only. So वहाँ से I called Satyendra and Siddesh was already in touch. Siddesh wanted to do some startup. He was already doing something in agri-tech, but he wanted to do something really good in healthcare industry. So that's how we met. मैंने सिद्धेश को बुलाया. सिद्धेश एंड आई वर्कड ऑन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड एज वेल घर पे ही थोड़े टाइम के लिए. फिर कोविड में यस. सो सत्येंद्र ने फिर ही हेल्प्ड अस इन सोर्सिंग दैट टाइम रिमोटली ओनली. हिज जॉब वाज स्टिल गोइंग ऑन. फिर उसके बाद वी वेंट टू पुणे. अनीश को भी बुलाया. अनीश इज़ अनदर बैचमेट ऑफ माइंड फ्रॉम IIT रुड़की. फिर हम चारों ने पुणे में कुछ आइडिएशन शुरू किया. क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम समझा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में. उसके बाद वी थॉट कि अब हमें कुछ बड़ा स्टेप चाहिए. हम यहाँ पे रह के कुछ नहीं कर सकते. एंड ग्रेट इंस्पिरेशन केम फ्रॉम नोकार्ग रोबोटिक्स. सो नोकार्ग द CEO निखिल कुरेले एंड हर्षित. So we used to know them because they were also from Bajaj. Nikhil was from Bajaj. Viewers के लिए बता दो, Robotics is the company, the startup which worked in first wave of COVID-19. They developed a ventilator, world-class ventilator in 90 days, and is very successful startup. And that helped India to fight in second wave. जब हमारे पास फर्स्ट वेव में वेंटिलेटर्स की कमी थी, सेकेंड वेव में होपफुली उतना हमें चैलेंजिंग नहीं था वो चीज़. सो वी कैन कंटिन्यू. या सो वहाँ से इंस्पिरेशन आया. उनने बताया कि IIT कानपुर इज़ डूइंग सम रियली गुड वर्क इन मेडिकल इंडस्ट्री. वी रेड दैट बुक अबाउट वेंटिलेटर्स एज वेल. सो उसके थ्रू वी केम टू IIT एंड देन स्टार्टेड वर्किंग. और ये पूरा टाइम कितना लगा सबको इकट्ठा करने में, एंड फिर उस वक्त आप फाइनेंस कैसे मैनेज कर रहे थे? सो टाइम इकट्ठा करने में ज़्यादा नहीं लगा क्योंकि मुझे पता था ये लोग वैसे हैं कि इनको बोलूँगा कुछ अच्छा काम करते हैं तो ये लोग आ जाएंगे. सो इट वाज ऑलवेज अबाउट गुड वर्क कि कुछ अच्छा काम करते हैं. सो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ फोन कॉल. अनीश को कॉल किया. ही वाज ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड इन हिज जॉब ही वाज डूइंग दैट टाइम. सो उसको बुलाया, ऑनबोर्ड किया. सत्येंद्र को ऐसे ही ऑनबोर्ड किया. सत्येंद्र ने थोड़ा इनिशियली हमें सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ फंड्स क्योंकि उसकी जॉब चल रही थी ऑलरेडी. सो सत्येंद्र का ऐसा सीन है, ही डिडंट यूज टू गो फॉर जॉब a lot of time. So उसका पे ऑलमोस्ट 50% 40% आता था कंपेयर टू हिज सैलरी क्योंकि वो ऑफिस जाते ही नहीं था. पर उसका काम हमेशा कंप्लीट रहता था. सो ही वॉज दैट एफिशिएंट. तो उसको बोला थोड़ा ऑफिस जाओ, बाकी पैसे हमें दो. तो ऐसे करके इनिशियली फाइनेंसेस मैनेज हुए. फिर अनीश की भी अच्छी हाई पेइंग जॉब थी उस टाइम, तो वो आया, उसने थोड़े फाइनेंसेस मैनेज किए, थोड़े पैसे दिए. फिर सबसे अच्छा फ़ायदा है IT से होने का कि योर फ्रेंड्स आर अर्निंग रियली वेल. सो उनसे पैसा मांगा इधर उधर से, बहुत सारे लोगों से. उनने आज तक वापस भी नहीं मांगे पर वो बेनिफिट्स मिले. पैसा इनिशियली वहाँ से आया. और हम लोग काफ़ी फ्रूगल और वैसे लोग हैं. लाइक हम लोग हॉस्टल्स में भी रहे IT में. इट्स नॉट लाइक कि हमें बाइक्स चाहिए बहुत सारी, हमें पैसा उड़ा रहे हैं इधर उधर. तो वी वर वेरी फ्रूगल इन टर्म्स ऑफ लिविंग. खाना को हम खुद बना लेते थे. एक महीने हमने सिर्फ दाल चावल खाया दिन में क्योंकि टाइम नहीं होता था ज़्यादा बनाने का. वो आधे घंटे में बन जाता था और एक बार बनाओ 2 बार खाओ. सो इनिशियली वैसे मैनेज किया. ज़्यादा पैसा हमने इन टर्म्स ऑफ हमारे खुद के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसमें खर्च नहीं किया. मोस्टली इनिशियल शुरू से थॉट वो था जितना पैसा आएगा सब कंपनी में लगा देंगे जी. तो वैसे मैनेज हुआ. फिर धीरे धीरे करके और पैसे मिले. अभी तक भी हम ज़्यादा सैलरी नहीं उठाते हैं कंपनी से. और थैंकफुली हम लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड, लाइक फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि हमें पैसे देने पड़ते हो वापस. काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनको घर पे पैसे देने पड़ते हैं या फिर देयर आर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन देम. हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं था, तो दैट वाज आल्सो अ गुड थिंग. अच्छा, सो बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर आई थिंक, यस, एंड ये प्रोडक्ट अभी आपका रेडी है. व्हाट इज़ दैट विजन आप अब आगे देखते हो? क्या देखते हो आने वाले 10 साल कैसे?
Vision, so we are already working on X-ray technology and ultrasound technology. ये दोनों modalities को हमें बहुत ज़्यादा refine कर रहे हैं in India. We definitely want to work on the technology side of medical imaging, not just products. So right now, if you see most of the products, maybe someone is making a, let's say, X-ray generator. So he is just making the generator. Maybe someone is making a software. He is just making a software, or AI, just AI. So we are, the one reason we are working on all of this stuff is we want to enhance the level of technology of medical imaging. We just don't want to shell out products in medical imaging. So ये स्टार्टिंग पॉइंट है. अल्ट्रासाउंड भी करना है, उसके बाद मेडिकल इमेजिंग पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी है. एंड एट द एंड वी जस्ट वांट कि जो मैन पावर का पे बर्डन है अभी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस पे, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाए in terms of using automations or portability, and taking dumb down the medical devices so that कोई भी यूज़ कर सकता है. It's not very sophisticated to use. So वो सब चीज़ें करके बर्डन कम करना है. ऑल्सो हेल्थ केयर सबके पास लेके जाना है. इट्स नॉट लाइक कि अगर आप हॉस्पिटल के आसपास रह रहे हैं तो ही आपके पास एक्सेस है, वरना नहीं है. एंड डायग्नोस्टिक इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स. अगर आप अर्ली डिटेक्शन बहुत सारी चीज़ों को कर लेते हो तो वो बहुत ही ईजीली सॉल्व हो जाती है. टीबी आप 6 months में आराम से ट्रीट कर सकते हो इफ़ द डायग्नोसिस इज दैट प्रॉपर टाइम, राइट टाइम. या फिर इसको वी जस्ट डोंट वांट टू बिल्ड प्रोडक्ट्स फॉर इंडिया, वी वांट टू बिल्ड प्रोडक्ट्स फॉर अदर कंट्रीज एज वेल. So all in all, taking medical imaging to that level कि a major chunk of diagnosis is happening by medical imaging, and it is at the predictive level. It's not just कि ट्यूमर बन गया 6 महीना हो गया अब डायग्नोस कर लो. It's about ट्यूमर 6 महीने बाद बनने वाला है. So this is very novel. Yeah. Thank you so much, Chirag, and your story was really inspiring. And I'll tell you guys too, if you have any idea, any zeal inside you of like this, what Chirag had, there is people who are going to support you, people like in SIC IIT Kanpur ecosystem, like SIC IIT Kanpur, where not just IITians are being supported. In fact, 60% of the founders are not IITians. So you do not have to be discouraged from anything. And we have like 15 plus domains we are supporting right now, and we operate into 12 programs from where you can directly get funding from, and these are all early stage startups which are being supported right now, and projects like ICMR which Chirag got. So we also give startups those kind of projects if we find ability in you. So thank you so much for watching. Stay tuned.